अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हादी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। सर मैंने वो पूछना था, आपने वो पेपर चेक कर लिया? हाँ जी, चेक कर लिए हैं। सर मार्क्स तो बता दें। क्लास के बाद मैं मैसेज में बताता हूँ, बल्कि क्लास वाइज में से। ठीक है, थैंक यू के सर। बाद। ठीक है सर।
जी हादी जमीना शायान फहाम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। Yes, sir. Hello. हम Welcome. डे से प्रीवियस टॉपिक्स की रिवीजन कर रहे थे और कल आपका टेस्ट भी हुआ है जो कि अभी चेक नहीं हुआ। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ट्रिग्नोमेट्री। You did trigonometry in your O level as well. I mean, in O level, you did Pythagoras theorem, you did trigonometric ratios. ये अगर ऑफ करें शायद ज्यादा बेहतर हो, वो ऑन रहेगा। इन ओ लेवल आपने ट्रिग्नोमेट्री आपने क्या किया? आपने ट्रिग्नोमेट्री में यू डिड पाइथागोरस थ्योरम, यू डिड साइन रेशियो, cos रेशियो, tan रेशियो, देन यू डिड साइन रूल, कोसाइन रूल, बेरिंग, लाइक दीज थिंग्स, जिसमें अननोन साइड एंगल फाइंड करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल में, नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ए लेवल में, ए एस में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। मीन ये ट्रायंगल्स को आप सॉल्व करना आप ओ लेवल में कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री को, ए एस की ट्रिग्नोमेट्री P1, it is divided into three parts. In the first part, we have to deal with trigonometric identities. Second, हमने देखनी है solving trigonometric equation, and third is graphs of trigonometric functions. ये three portions हैं जो कि हमने trigonometry में करने हैं. So the first subtopic is trigonometric identities. In P1, there are two trigonometric identities. One is first is sine square x plus cos square x is equal to 1. And second is tan x is equal to sine x over cos x. Sine square x plus cos square x is equal to 1 is the first identity, and the second one is tan x is equal to sine x over cos x. Just one. And with door closed. They're calling you? Okay, you can check. Okay, so in our syllabus there are two trigonometric identities. One is sine square x plus cos square x is equal to 1, and other is tan x is equal to sine x over cos x. And both these trigonometric identities will be given in the formula sheet. But याद हो जाएंगी आपको वैसे ही कि sine square theta, angle x, instead of x it can be theta, it can be y, it can be t. So sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Tan theta is equal to sine theta over cos theta. So in terms of x, in terms of theta, in terms of y हो सकता है. So first one, sine square x plus cos square x is equal to 1.
वी डोंट हैव टू प्रूव दीज आइडेंटिटीज कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 कहां से आएगी, बट अगर आप चाहें तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट जस्ट मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट लेने के लिए, if you want to see कि how sin square x plus cos square x is equal to 1, let's see। जहां जहां पे आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे sin square x लिखा होगा ना, उसका मीनिंग समझिएगा कि दिस इज रिटन sin x होल स्क्वायर, वो बेसिकली स्क्वायर होल फंक्शन के ऊपर होता है। if it is written cos square x, so basically this is the square of that whole cos x। in O level you did trigonometric ratios, sine ratio, cos ratio, tan ratio। what was sine ratio? Perpendicular over hypotenuse। what was cos ratio? Base over hypotenuse। so I want to prove that sine square x plus cos square x is equal to 1। so I will start from the left hand side, LHS। what is the left hand side here? Here the left hand side is sine square x plus cos square x। if the identity is true, then I will simplify this, and the answer should be 1। okay, let's use, what is sin x? abhi aapne बताया sin x is perpendicular over hypotenuse। so because there is a square, so it means this is perpendicular over hypotenuse whole square। what is cos x? base over hypotenuse whole square। so this basically जो square है ये दोनों के ऊपर अलग अलग है। I can write p square over h square, b square over h square। there are two fractions, denominator is already common, let's take their LCM। so it is h square। so numerator में आपके पास आ जाएगा p square plus b square। हमने तो प्रूव कर रहा था कि it is equal to 1, ये तो 1 के इक्वल नहीं आ रहा। कुछ देखें, कुछ कहीं से 1 आ रहा है। कैन वी गेट 1 फ्रॉम हियर? इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ये सिर्फ जैसे में एक टॉपिक स्टार्ट करने की जो आइडेंटिटी हम यूज करनी है उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये कहीं आपको नहीं चाहिए। मैं सिर्फ प्रूव बता रहा हूँ कि क्या ये जो यूज करनी है हमने आइडेंटिटी, ये इक्वल है भी कि नहीं। हाउ दिस इज इक्वल टू 1? एनी आइडिया? p square plus b square is equal to what? h square। Pythagoras theorem था hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। so the numerator is perpendicular square plus base square, so mean that is hypotenuse square। can I write p square plus b square as h square, or denominator is already h square? now h square and h square will be cancelled out and get the answer 1, which is your right hand side। so you have started from the left hand side and you got the right hand side। so this is just a proof that sin square x plus cos square x is equal to 1। लेकिन आपको पेपर में sin square x plus cos square x is equal to 1 को प्रूव नहीं करना। आपको tan x is equal to sin x over cos x भी प्रूव नहीं करना। what we have to do, we have to use these two identities। ये हमने two identities use करनी है किसी और आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। और कौन सी आइडेंटिटी? जो क्वेश्चन में पेपर में गिवन हो। तो यही टू आइडेंटिटी जो थ्रू आउट हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। sin square x plus cos square x is equal to 1, tan x is equal to sin over cos। अगर कहीं पे लिखा हुआ sin square x plus cos square x, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1। अगर कहीं लिखा हुआ sin square x plus cos square, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 से। इसी आइडेंटिटी से मुझे बताइए व्हाट इज sin square x। फ्रॉम दिस आइडेंटिटी sin square x इज इक्वल टू व्हाट? अहमद, इसी आइडेंटिटी में से sin square x को अगर आप सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा? 1 minus cos square x। so sin square x is equal to 1 minus cos square x। ये नई आइडेंटिटी मैंने नहीं लिखी, वही है। तहा इसी में से बताइए cos square x is equal to what? 1 minus sin square x। क्या ये कोई न्यू आइडेंटिटीज हम कर रहे हैं?
नो, इट्स द सेम नंबर वन, आइडेंटिटी नंबर वन, उसी को मैंने एक्सपेंड किया कि फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी, if you make sin square x subject, तो cos square x will be on the other side, will become 1 minus cos square x. और अगर आप sin square x को इधर शिफ्ट कर दें तो this will be cos square x is equal to 1 minus sin square x. ओके, इसी तरह tan x को भी हम लिख सकते हैं. अगर कहीं पे लिखा हुआ sin x over cos x, आपका क्या नाम है? फातिमा. अगर फातिमा कहीं पे sin x over cos x लिखा हो तो हम क्या लिख देंगे उसकी जगह? tan x. अगर कहीं tan x लिखा हुआ तो उसकी जगह sin over cos. ठीक है, बताइए व्हाट इज, इफ tan is sin over cos, what is 1 over tan? If tan is sin x over cos, what is 1 over tan? Cos x over sin x. Got it? अगर sin x, अगर tan x है sin over cos के, तो 1 over tan किसके इक्वल होगा? cos x over sin x के. ये देखिए, ये जो मैंने लिखी हैं, these are just the extension of these two identities. These are not new identities. Originally, you have to remember only these two identities. And what are those two identities? Again, sin square x plus cos square x is equal to 1. Tan x is equal to sin x over cos x. क्या हम इसको यूं लिख सकते हैं? बताएंगे sin x plus cos x होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? sin x plus cos x. We know sin square x plus cos square is 1. Can you tell me sin plus cos whole square? अच्छा चलो मुझे ये बताइए, कैन आई से कि दिस इज इक्वल टू 1? इज दिस ट्रू? नो. ये जो होल स्क्वायर नहीं, ये सेपरेट स्क्वायर है, साइन स्क्वायर. साइन के ऊपर अलग स्क्वायर होना चाहिए, कॉस के ऊपर अलग स्क्वायर होना चाहिए, देन इट विल बी इक्वल टू 1. सो दिस इज नॉट ट्रू. सो sin x plus cos x होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1. सेपरेट स्क्वायर्स होंगे तो वो 1 के इक्वल होगा. सो देयर इज नो सच आइडेंटिटी, तो इसलिए ऐसा नहीं दिखना. So identity has sin square x plus cos square x equal to 1. Fatma, sin square x is equal to, from this, sin square x is equal to 1 minus cos square x, and cos square x is equal to 1 minus sin square x. Whenever you get sin square plus cos square, you can replace it with 1. अगर कहीं 1 भी हो तो शायद हम उसको भी replace कर दे sin square plus, as per our requirement. Now what we have to do with these two identities? I mean, we know these two identities now. पेपर में क्वेश्चन क्या हो? पेपर में अदर देन दीज टू कोई और आइडेंटिटी गिवन होगी और उस आइडेंटिटी को प्रूव करना होगा बाय यूजिंग दीज टू आइडेंटिटीज, बाय यूजिंग योर एल्जेब्रा. 8th क्लास का एल्जेब्रा, 9th क्लास का एल्जेब्रा अच्छा होना चाहिए. मीन क्वेश्चन देखिए कैसा होता है. क्वेश्चन इज प्रूव दैट cos square x minus sin square x is equal to 1 minus 2 sin square x. This is the question given in the exam, that you have to prove this identity, that cos square x minus sin square x is equal to 1 minus 2 sin square x. Before starting, पहले जरा देखिए एक मिनट, ये जो इक्वल मैंने लिखा हुआ है ना, ये इक्वल होता है नॉर्मली इक्वेशन के लिए. दिस इज आइडेंटिटी. प्लीज देखिए, दिस इज आइडेंटिटी. और आइडेंटिटी के लिए नॉर्मली 3 लाइंस होती हैं. ये 3 लाइंस, जस्ट ऑब्जर्व दिस. ये आइडेंटिटी का सिंबल होता है. 3 लाइंस will behave like equation, but the difference is the equation is only true for a specific value of x, whereas identities are true for every value of x. बट यहाँ पे अभी अगर देखा है तो इक्वल लिखा हो या आइडेंटिटी लिखी हो, नो डिफरेंस एट ऑल राइट नाउ. जी, प्रूव करने के मेथड्स क्या हैं? बहुत से क्वेश्चन आज हम प्रूव करने वाले करेंगे. एक मेथड ये कि आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट लें, उस लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते जाएं, एंड यू नीड टू ब्रिंग राइट हैंड साइड. आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड लेके आ गए तो इसका मतलब प्रूव हो गया. सेकंड मेथड,
Start from the right hand side and bring left hand side. थर्ड मेथड, दोनों को इकट्ठे सॉल्व करते जाओ और एंड पे दोनों इक्वल आ जाए. द थर्ड वन इज नॉट रिकमेंडेड. उसमें अक्सर आप मिस्टेक करते हैं कि आप शिफ्टिंग कर देते हैं, वो अलाउड नहीं होती. सो हम थर्ड नहीं करेंगे. हम नॉर्मली क्या करेंगे, किसी एक साइड से स्टार्ट किया करेंगे और दूसरी साइड लेके आ जाया करेंगे. एंड मोस्टली क्वेश्चंस आपके लेफ्ट हैंड साइड से ही होंगे. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. जस्ट कॉपी द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज. cos square x minus sin square x. जी हमने प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उससे इक्वल है. तो देखिएगा अगर आप प्लीज प्रूव करते हुए मैंने कहा है क्या यूज होगा. एक तो वो जो टू आइडेंटिटीज मैंने लिखी है वो यूज होंगी. नंबर टू, योर बेसिक 8th क्लास 9th क्लास का अलजेब्रा यूज होगा. थर्ड मीन कि यू नीड टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग कि व्हाट डू वी नीड, हमें लाना क्या है. हमें राइट साइड पे क्या चाहिए. हमारे पास लेफ्ट साइड पे कॉस भी है, साइन भी है. अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो कॉस भी है, साइन भी है. राइट साइड पे क्या है, ओनली साइन. वी डोंट नीड कॉस. So we don't need cos. So can you remove cos from here? How? 1 minus sin square x. हमने cos square x पढ़ा था ना, 1 minus sin square. So we don't need cos square x. So just replace this cos square x with, apply the identity, and cos square x is equal to 1 minus sin square x. और वो जो आगे minus sin square x है वो as it is लिखा हुआ है. Now what is minus sin square x minus sin square x? Minus 2 sin square x. So we got 1 minus 2 sin square x. And yes, this is our right hand side. यही है ना हमारी right hand side. So we got right hand side. So proved. So we got right. So we started from the left hand side and we got right hand side. So this is the proper way to prove any identity. So use क्या हुआ, एक जगह सिर्फ identity यूज हुई. थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन कि आपने माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर को माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स किया. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. show that cos square theta minus sin square theta is equal to 2 cos square theta minus 1 is equal to mean identity. Identical to 2 cos square theta minus 1. ट्राई करें. स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड is equal to 2 cos square theta minus 1. So let's start from the left hand side. So left hand side is cos square theta minus sin square theta. This is your left hand side. जी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें तो हमें देखना है कि हमें राइट साइड पे cos चाहिए. वी डोंट नीड sin. So what should we do? Yes, cos square theta minus sin square theta will be replaced with 1 minus cos square theta. Be careful, outside it's negative. So we will keep the bracket. So sin square theta is 1 minus cos square theta. So ये आपके पास आ गया cos square theta minus 1 plus cos square theta. So what is cos square theta plus 1 cos square theta? So ये cos square theta और ये cos square theta दोनों ऐड होंगे तो that will become 2 cos square theta minus 1. And this is your right hand side.
So proved. So ये था स्टार्ट एक कुछ इजी क्वेश्चंस के साथ. नेक्स्ट इज prove that sin x over 1 minus sin x minus sin x over 1 plus sin x is identical to 2 tan square x. जी लेफ्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट लें, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें देखिए इन आइडेंटिटीज में एक तो टू आइडेंटिटीज आपकी जो अभी आपने एएस में पढ़ी वो यूज होंगी. फिर आपका 8th क्लास का, मैंने कहा ना 8th 9th क्लास का एलजेब्रा यूज होना है. और फिर तीसरी बात, यू हैव टू कीप ऑन लुकिंग एट द राइट हैंड साइड कि आपको लाना क्या है. जो राइट साइड पे लानी है एक ही टर्म है हमारे पास. पहली बात कि लेफ्ट साइड पे टू फ्रैक्शंस हैं. तो टू फ्रैक्शंस जब हो तो सबसे पहले आपको इनको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करना है. एंड हाउ टू राइट देम इन सिंगल फ्रैक्शन? बाय टेकिंग एलसीएम. सो इसको सिंगल डिनोमिनेटर बनाए, मीन एलसीएम लें. सो एलसीएम इज 1 minus sin 1 plus sin x now this 1 plus sin x will get multiplication with this sin x, and this 1 minus sin x will be multiplied with this sin x. So it will become sin x into 1 plus sin x minus sin x into 1 minus sin x. Now multiply. Sin x into 1 is sin x. Sin into sin is sin square x minus sin x minus minus plus sin x square over डिनोमिनेटर में. अगर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ना हम. डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना हम. एक आइडेंटिटी भी आपने वो लेवल में पढ़ी थी जिससे आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. डिनोमिनेटर को a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई अगर करना चाहते हैं मीन इस तरीके से, अगर 1 with 1, 1 with sin x, sin with 1, sin with sun, ये सब कर सकते हैं. But there is a easier way. This is written a minus b a plus b, and what is a minus b a plus b equals to? It's a square. We know a plus b is equal to a square minus b square. 8th क्लास में ये आइडेंटिटी है, तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम. डिनोमिनेटर इज 1 minus sin 1 plus sin, so it is 1 square minus sin square. a square minus b square. कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल. हमारे पास क्या रह गया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स? इट्स 2 साइन स्क्वायर एक्स. और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 1 minus sin square x.
सो यहां तक पहुंच के हम थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और देखते हैं कि हमने क्या किया अभी तक कि हमारे पास टू फ्रैक्शन थी, उनको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब आप देखिए राइट साइड क्या हमें चाहिए, क्या हमें 2 tan² x चाहिए। स्वतः tan किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कॉस के। तो अगर आपको tan² चाहिए, इट मींस वी नीड sin² ओवर cos²। तो sin² तो हमारे पास न्यूमरेटर में है, हमारे पास डिनोमिनेटर में cos² नहीं है, वो कैसे लाएं? sin² 1 माइनस cos² के इक्वल ही होता है, तो ये ऑलरेडी 1 और या cos² 1 माइनस sin² के इक्वल होता है। ये 1 माइनस sin² लिखा हुआ है, तो 1 माइनस sin² इज इक्वल टू cos²। सो सिंपली हम इसकी जगह लिख देंगे 2 sin² x as it is over 1 minus sin² x is basically cos² x। साइन ओवर कॉस होता है tan, और sin² ओवर cos² क्या होगा? tan²। सो 2 as it is tan² x। So this is your right hand side. Clear? Okay, next is prove that 1 over sine theta minus 1 over tan theta whole square is equal to 1 minus cos theta over 1 plus cos theta. फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपकी लेफ्ट साइड से भी आप स्टार्ट लें तो लेफ्ट साइड पे साइन और tan है, और आपको चाहिए क्या? कॉस। तो ये मुझे बताइए, sin² तो होता है ना 1 माइनस cos²। क्या हम साइन को 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं? अगर उनके ऊपर स्क्वायर ना हो तो फिर वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो सकती। So we know sin² x equal to 1 minus cos² x, but sin x is not equal to 1 minus cos x. It should have a square. So let's take start from the left hand side. Gee, what should be the first step? Whole square, you want to open square? I think that will not work. Do we need 10? No. देखिए साइन हमें नहीं चाहिए, बट साइन को वी कांट चेंज एनीथिंग। साइन को हम कुछ नहीं लिख सकते। अगर साइन स्क्वायर होता तो वी शुड हैव रिटन 1 माइनस cos²। लेकिन tan को तो चेंज कर सकते हैं ना। tan क्या होता है? साइन ओवर cos, बट दिस इज 1 ओवर tan, cos ओवर साइन। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि 1 ओवर tan को हम लिखेंगे cos ओवर साइन। ताहा ये फर्स्ट स्टेप। So the first step is we have replaced 1 over tan with cos over sine. अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर राइट साइड पे देखें, देयर इज ओनली वन फ्रैक्शन एंड वी आर गेटिंग टू फ्रैक्शन और उसका स्क्वायर। सो पहले तो आप ऐसा करें, इनको सिंगल फ्रैक्शन में लिखें। इनसाइड द स्क्वायर टेक एलसीएम, ऑलरेडी मीन कॉमन है डिनोमिनेटर।
So we will make them in the form of a single denominator. This is 1 minus so making the denominator common, we got 1 minus cos theta over sin theta. Can I write the square of the numerator separately and the square of denominator separately? We can do that. So 1 minus cos theta whole square and denominator में sin square theta. अहमद क्या होना चाहिए अब नेक्स्ट स्टेप? देखिए स्टेप्स बहुत से हो सकते हैं, बट यू शुड कीप योर राइट हैंड साइड इन योर माइंड कि व्हाट डू वी हैव टू ब्रिंग. क्या न्यूमरेटर का आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि स्क्वायर ओपन कर दें? शुड वी ओपन द स्क्वायर? देखिए राइट साइड पे यू नीड 1 माइनस कॉस इन द न्यूमरेटर, तो 1 माइनस कॉस है, स्क्वायर नहीं हमें चाहिए. अगर मैं स्क्वायर ओपन कर दूंगा तो 1 माइनस कॉस भी खत्म हो जाएगा. आपके पास क्या बन जाएगा? वो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, 1a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन खराब हो जाएगा. आप देखिए डिनोमिनेटर में वी हैव साइन स्क्वायर. फातिमा डिनोमिनेटर में हमें चाहिए क्या? कॉस. देखिए कॉस चाहिए, तो आप इस साइन स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं ना. कैसे करें? जीता कैसे चेंज करें? Numerator is 1 minus cos theta whole square as it is, and denominator we know sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta. क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? नो. न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में अलग स्क्वायर है, होल नहीं है, तो नो, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रही. कैसे करें आगे? देखिए ओपन करने से उल्टा क्वेश्चन खराब होता है. यस, एट्थ क्लास में आपने आइडेंटिटी की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज a plus b, a minus b. We know this identity, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b. ये कहाँ अप्लाई करूं? डिनोमिनेटर में. डिनोमिनेटर में क्या दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है? कॉस के ऊपर तो है, लेकिन वन के ऊपर स्क्वायर नहीं, तो वन के ऊपर स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे. So now just apply the identity on the denominator. Mean write numerator as it is, and denominator is a square minus b square, so it can be written as 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. फातिमा यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है? अब क्या कैंसिल हो रहा है? एक डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस कॉस है, न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस प्लस कॉस थीटा. और यही हमारी राइट हैंड थी, यही हमें प्रूव करना था. सो दिस इज योर राइट हैंड साइड proved, right? So see what we are doing, we are just using those two identities, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, and second tan theta is equal to sin over cos theta, and we are trying to prove some other identities by using those two identities. So हम इंशाल्लाह इसी को कैरी ऑन करेंगे कल भी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.